I'm I'm asking the what are the different components which make up the neuromuscular junction. वो जंक्शन किस किस से मिलके बनते हैं? Pre-synaptic membrane या pre-synaptic terminal and post-synaptic और बीच में क्या होता है? Synaptic cleft. So these are the badges. So these are the components of the neuromuscular junction. We have covered the pre-synaptic terminal में. What are the components in the pre-synaptic terminal? Then there are cleft, then the post-synaptic terminal. Post-synaptic terminal is a very important receptor channel. What is that called? Post-synaptic terminal में क्या होता है? Receptor channel होता है, which is operated by the neurotransmitter acetylcholine. उसको क्या कहते हैं? Is that channel called? Please get it. That's it. So we have discussed जो synapse होते हैं. We have discussed there are two types of synapse, electrical and chemical synapses. Electrical synapse में क्या होते हैं? It passes through the information is passed through the gap junction. And in the chemical synapse, there is involvement of the neurotransmitter, chemical messenger. Okay, and through a receptor channel, it is transmitted. To discuss, ये आपका electrical synapse है. This is an example of chemical synapse. You can see here, है ना? यहाँ पे gap junction है. ये pre-synaptic, post-synaptic बीच में gap है ना? This has been enlarged here. Pre-synaptic, post-synaptic, ये gap junctions है. इसके through information जा रहे हैं. इसमें chemical में pre-synaptic terminal है भी vesicle, which is having the neurotransmitter, है ना? इसके through ये channels के through cross कर रहे हैं. Okay. So we have discussed all these things. Pre-synaptic terminal कौन बनाता है? That is formed by the pre-synaptic terminal is formed by the axon terminal of the alpha motor neuron, है ना? And their axons, उसके जो cell body कहाँ पे होते हैं? जो alpha motor neuron के होंगे वो कहाँ पे होंगे? Spinal cord में होंगे. That is in the anterior horn cell. To discuss all these things, these are supported by a Schwann cell, that is the teloglia, glial cells. We have discussed all these things, and we have discussed that these are having the presynaptic जो ends होंगे, उसमें क्या होंगे? There are active zones कौन से होते हैं? जहाँ पे vesicles का नंबर ज्यादा होता है. That is the active zone. And this presynaptic membrane is having somewhat dense area that are called the dense bars. जहाँ पे क्या होते हैं? Dense bars के area में जो voltage gated calcium channels है, they are much more in number there. Okay, there is a synaptic cleft. It was having 20 to 40 nanometer, and this is having a extracellular matrix. In that, there are enzymes which are present to control the acetylcholine level. है ना? कौन से enzyme होते हैं? Acetylcholine trace enzyme. Okay, and on the postsynaptic terminal, which was just that part of the postsynaptic membrane, which is just opposing to the synaptic nerve, presynaptic membrane, the terminal. इसको क्या कहते हैं? That is called the end plate membrane, motor end plate भी कहते हैं. Just उसके जो opposite में होगा, that is a depressed area, that is called the synaptic trough भी कहते हैं. You can see of this area. तो इसके just oppose कर रहा है. That is the synaptic trough. And you can see here, there are neural clefts here, which में क्या है? Foldings है to increase the surface area. And this area is having a lot of this receptors. That is acetylcholine receptor. That is also called nicotinic acetylcholine receptor. Okay, because this receptor can also bind with a substance called nicotine. Okay, especially NM type. Okay, so and this channel is having a strong negative force. Negative force is so all the negative substances, they will not be able to cross this membrane because they will be repelled. है ना? Positive substances को cationic channels भी इसलिए कहते हैं because the positive charges को they can allow. Okay, not the negative charges.
So the neuromuscular transmission. So how this transmission? Obviously, all these membranes, which are presynaptic, then synaptic cleft, then the postsynaptic membrane, they are forming a junction. That is the neuromuscular junction. Look at it, and through that junction, that transmission is occurring. That's why it is called the neuromuscular transmission. That is, the information is passing from the nerve terminal to the muscle end. So this transmission is called the neuromuscular transmission. How this neuromuscular transmission is occurring? You have to understand this phenomenon. So you can see here from the anterior horn cell of the spinal cord, you see the axon which is coming. I have enlarged this axon terminal so as to understand the different processes which are happening here. Disproportionately I have enlarged it to understand it better. So this is the axon terminal and this is the postsynaptic membrane and this is the motor end plate. You can see this area which is just opposing to this knob, synaptic knob. That is the motor end plate area. So you can understand that this transmission, there is involvement of chemical messenger, that is the chemical substance, that is acetylcholine. And these acetylcholines are within a vesicular membrane. It open nahi rehta. It is not wandering here. It is enclosed within a packet. That membranes are called vesicles. That is, it is having vesicular membrane. So within the vesicular membrane, a number of acetylcholine molecules are there. Okay, up to 10,000. So these acetylcholine molecules, you have to understand that from where these acetylcholine molecules they are coming. Acetylcholine, तो क्या होता है, ये जो vesicular membrane होता है, they are just empty bags. Initially, these vesicular membranes are just an empty bag, and from where this vesicular membrane they are coming, ये कहाँ से आएगा? From the cell body. Yes, because it is having, in the previous also I have told that it is having different proteins. That protein has to be generated in the cell body because the machinery is there, and through the exoplasmic transport this is coming. This vesicular membrane is being formed here. Once it has been formed, it has to get the acetylcholine. From where the acetylcholine comes, and you know acetylcholine is at two components, that is acetate and choline. So both components have to be there. एक तो acetate आ जाएगा acetyl coenzyme में, from the mitochondria you will get, okay, and from where the choline will come? The choline, what is there, that on the presynaptic membrane, all along the presynaptic membrane, there are transporters for the choline. It's called the choline transporters. Okay, channels होते हैं choline के लिए. You can see here, one of the transporter I have made here. This is choline transporter. What is happening is that you are taking food. Along with the food, you are having different. Along with the food, getting the choline out. So in the food, you are having the choline. So from the intestine, which is the intestine, that is absorbed in the ECF. Blood में absorb हो जाता है. And when it is absorbed here, this cholinergic, these क्या है, ये nerve endings जो है, वो ECF में क्या होता है? They are dangling, they are floating there in the ECF area. From there, what will happen? It will absorb. It is very sensitive to the presence of choline. As choline enters into the ECF, these transporters become active and they start uptaking the choline. Choline को क्या करता है? अंदर ले जाना शुरू करता है. So this terminal is having both acetate and choline. So they will fuse together under the presence of enzyme called choline acetyl transferase. And the choline acetyl and transferase. So ultimately the acetylcholine will be formed. As acetylcholine is formed, these vesicular membranes which were initially empty, these are on its membrane, vesicular membrane is having a lot of acetylcholine transporters. इसके ऊपर में क्या होता है? बहुत सारे transporters होते हैं. So these are also very sensitive
to the presence of acetylcholine. जैसे acetylcholine बनना शुरू होता है, they start uptaking the acetylcholine and they start accumulating, these vesicles start accumulating the acetylcholine within itself. So number of acetylcholine will increase in the vesicular membrane. अब vesicles में बन गया, packets में आ गए. Okay, so you have now what you have to do for the transmission to occur. This vesicular membrane has to rupture. It has to come here and they have to fuse with this membrane, and they have to make a hole in the pre-synaptic membrane, and they have to release the neurotransmitter. acetylcholine को release करना होगा, and जैसे यहाँ release होगा तो यहाँ पे receive करने के लिए receptors हैं. So you have to understand how this vesicular membrane gets ruptured. So what happens that as the when you stimulate nerve, suppose that you are talking about the biceps muscle अगर contract करना, so the nerve has to be stimulated. So you stimulate the nerve, what will happen? When you stimulate, there is the action potential will travel over it, है ना? The action potential travel, जो traveling form में होता है, that is the action potential. So what happens that the incoming action potential, that is the potential which is in motion, when it reaches the synaptic terminal area, this synaptic terminal area is having, जैसे आपको बताया था propagation of impulse, how it was undergoing, because जैसे the action potential जो आगे बढ़ रहा होता है, so towards the neighboring area and it opens the voltage gated sodium channel, है ना? So incoming action potential will open the voltage gated sodium channel, because previously it was at resting state, है ना? It was at resting state. जैसे action potential travel करते हुए आ रहा है, क्या होगा? Action यहाँ पे जो voltage gated sodium channels है, it is happening all through the membrane. ये हर जगह होते हुए आ रहा है, तभी action potential travel कर रहा है. Okay, so what happens that the incoming action potential will activate the neighboring sodium voltage gated sodium channel, and this sodium channel will open up and the action potential will occur here also. So it will travel over here. So the incoming action potential will, what happens that the action potential यहाँ से होते हुए इधर आ रहा है. It is all over the pre-synaptic membrane area. So the incoming action potential will activate this calcium channel. This is voltage gated calcium channel. So this is depolarization sensitive voltage gated calcium channel. ये क्या है? ये जो calcium channels है, ये तब तक ओपन नहीं होगा, it is depolarized. This area is depolarized. Action potential यहाँ पे भी नहीं आएगा. जैसे action potential यहाँ पे आया, this voltage gated calcium channels will open up. Okay. So this यहाँ पे ये सारे जगह होते हैं, all over the terminal area, voltage gated calcium channels. So calcium concentration is high outside or inside? Outside the membrane. So what will happen? There will be influx of calcium ion. Calcium क्या होगा? टर्मिनल के अंदर आना शुरू हो जाएगा. As a calcium ion, this channel is very important. So as the calcium concentration is increased inside the membrane, what happens that this vesicular membrane, this has to come here. यहाँ पहुँचना है ना? So what happens that as the calcium concentration is increased here, this vesicular membrane and this presynaptic membrane, they are attracted towards each other. How it occurs? Because what happens that ये जो इसके ऊपर में क्या होता है? Proteins होते हैं, which are very sensitive to presence of calcium. Okay, that protein is called the, क्या कहते हैं उसको? What is that called? There is a specific protein, very special protein all over the vesicular membrane area, and which are very sensitive to the presence of calcium. That are calcium sensitive protein. Okay. So what is that protein called? That is called synaptobremin. These are choline transporters. These are synaptobremin. इसके ऊपर में होता है. I have taken here to understand it better. So all over the synaptic vesicular membrane, you are having a SNAP protein.
synaptobrevin कहते हैं, synaptobrevin. These are calcium sensitive protein. Okay, and this is a type of SNAP25 protein. Okay, actually. So this synaptobrevin is there on the vesicular membrane. Okay, and there is another calcium sensitive protein over this presynaptic membrane, and this is called syntaxin. है ना, यहाँ पे syntaxin होता है. Here there is presence of syntaxin, which is sensitive to the presence of calcium, and there is synaptobrevin over there. Okay, जैसे यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है. What happened that this syntaxin in the absence of calcium, जो कैल्शियम नहीं था, it was closed. It is having, यहाँ पे क्या होता है, there are areas. Okay, this becomes inactive. This remains in inactive state. जैसे कैल्शियम का प्रेजेंस होता है, this becomes active. It's opened its head, and it is able to receive this vesicular membrane. It can receive. It opens the space to receive the vesicular membrane. Are you able to understand? This is in the presence of. This is without the presence of calcium. ये calcium होता है, ये open हो जाएगा. So what happened that under the influence of calcium, this synaptobrevin and syntaxin, they come together. Okay, ये क्या होता है, इधर की तरफ travel करता है, and it opens its head in the presence of calcium, the side, and it receives the vesicular membrane. As the synaptobrevin यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर बैठ गया इधर. So what happened that there is interaction of the synaptobrevin and syntaxin. So when it comes in contact with synaptobrevin, both interact and contract. Okay, जैसे ही आता है क्या करता है, दोनों interaction होता है and they start contracting also. During that process, it fits in a lock and key fashion. Okay, यहाँ पे आया fit हो गया. As it fits over here, it contracts and interacts, and in that process it makes a hole. यहाँ पे क्या करता है, ये hole कर देता है. Okay, and these are all occurring in the presence of calcium. So what happens that it makes a hole, and after the hole is formed, what will happen? All the chemical substance, that is the neurotransmitter acetylcholine, they will be released. है ना, synaptic cleft area में release हो जाएगा, and this synaptic cleft first, obviously near the presynaptic membrane area, there will be more neurotransmitters यहाँ पे जाते होंगे, यहाँ पे कम है initially. So what will happen, you know, this is the synaptic cleft area, it is having ECF also, है ना, the cellular fluid area है. So initially यहाँ पे acetylcholine का concentration ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा. As you know, the substance moves from high concentration to low concentration, so there will be diffusion. यहाँ पे क्या होगा, diffuse होकर इधर आ जाएगा. Okay, as it reaches over the postsynaptic membrane area, that is the motor plane area. I am talking about this area, just opposing to this nerve terminal. So this motor end plate area, this has to be received here. To receive these neurotransmitters, there are, आपको बताया था ना क्या चैनल है, Nicotinic cholinergic receptor channel. Nicotinic cholinergic receptor channel. So there are two sites over here. To be acetylcholine, they can bind over here. जब दो molecule acetylcholine यहाँ के bind करते हैं, there are two areas. What happens? Until and unless जब तक ये bind नहीं करेंगे तो क्या होता है, ये channel close रहते हैं. Okay, जैसे ये bind करता है acetylcholine, यहाँ पे आके अपने site पे बैठता है, this channel gets opened, and this acetyl nicotinic cholinergic receptor channel is a pentameric receptor channel, है ना. So what happens that जैसे acetylcholine आकर bind करेगा, this channel will be opened up, and this channel will be permeable, and this, as you know, this channel is a negatively charged channel, so it will not allow the negatively charged substances. Okay, so what will happen? This is the ECF area. This ECF area is also having sodium, potassium, all the ions which are having. As you know, sodium is high outside than the inside, so there will be influx of sodium. Sodium ion तो अंदर जाते आएंगे, है ना. But
पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होते हैं बाहर? इट इज इनसाइड मोर, है ना, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ज्यादा होता है. So some of the potassium will also go outside. But why? The sodium is the influx of sodium is more, but potassium is less. Why is it so? Who will tell? Why the potassium influx is less, but the sodium influx is much more? Because one of you please say. Yes, not in chorus. What happened that, as you know, this is the earlier it was in the resting state. मोटर इनफ्लेट तो रेस्टिंग स्टेट में है ना. इन द रेस्टिंग स्टेट कितना होता है? -90 मिलीवोल्ट अप्रोक्सीमेटली मसल्स का होता है ना. तो द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोर नियर टू द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम और पोटेशियम. इट इज मोर नियर टू द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम, है ना. इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना होता है पोटेशियम का? -92 millivolt. So it is almost near to the equilibrium potential of potassium. And what about the equilibrium potential of sodium? It is कितना होता है? +60 millivolt. So it is far away from the equilibrium potential of sodium. So who will किसका influx या outflux ज्यादा होगा? सोडियम का होगा. तो वाइड वेरिएशन है equilibrium potential और resting state के बीच. So what happened that the influx of sodium is much more than the efflux of potassium. Potassium बहुत जाएगा बाहर, है ना, क्योंकि लगभग ये resting state की तरफ है, RMP के बराबर होता है. So what happened that much of the sodium will get inside. As the sodium gets inside, you know, ये पहले resting state में था, negatively charged था. Resting state में क्या होता है? Inside negative, you know, है ना. तो जैसे सोडियम इनफ्लक्स होगा तो क्या होगा? निगेटिविटी कम होना शुरू होगा. -90 से -80, -60, इट विल गो टुवर्ड्स दैट. ओके, एंड अल्टीमेटली इट मे क्रॉस द 0 millivolt आल्सो. ओके, सो एज द सोडियम गेट्स इनसाइड, व्हाट हैपेंस दैट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बी बिकम मोर लेस नेगेटिव एंड इट गोज टुवर्ड्स द डिपोलराइजेशन स्टेट. डिपोलराइजेशन की तरफ जाएगा. सो व्हाट हैपेंस दैट यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाएगा एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द एंड प्लेट पोटेंशियल. बिकॉज मोटर एंड प्लेट में डेवलप कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंड प्लेट पोटेंशियल. वेदर दिस एंड प्लेट पोटेंशियल इज एन एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल है या लोकल पोटेंशियल है? इट इज अ लोकल पोटेंशियल. इट इज अ ग्रेडेड पोटेंशियल. इट इज नॉट एक्शन पोटेंशियल. Because you know the action potential can develop only when there is opening of the voltage gated sodium channels. जब तक voltage gated sodium channels नहीं open up होंगे तो क्या होगा? action potential develop नहीं होता. Whatever may be the potential change. But what happens that यहाँ पे तो क्या होता है? ये channel होता है Nicotinic cholinergic receptor channel. लेकिन इसके flanks पे क्या होता है? motor influx के flanks area में there is a lot number of voltage gated sodium channels. दोनों साइड में क्या होते हैं? फ्लैंक एरिया में यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. सो व्हाट हैपेंस दैट एज द सोडियम गेट्स इनसाइड, जैसे अंदर ट्रिकल इन करता है, सो सम ऑफ द सोडियम दे गो टुवर्ड्स द नेबरिंग एरिया एंड व्हाट इट डज, यहाँ पे पहले रेस्टिंग स्टेट में था तो सोडियम इधर से ट्रिकल होकर साइड में चला गया. व्हाट विल डू? रेस्टिंग स्टेट को क्या करेगा? थ्रेशोल्ड की तरफ ले जाना शुरू करेगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ. आप एबल टू अंडरस्टैंड? सो सम ऑफ द सोडियम विल ट्रिकल एंड गो टुवर्ड्स द नेबरिंग एरियाज एंड इट विल क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट दिस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. सो द RMP will reach to the threshold potential state, and when the threshold will reach, this channel will be opened up and huge number of sodium will get inside. And because ये क्या होगा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के चलते क्या हो रहा है? यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है. सो दिस विल डेवलप अ फुल ग्रेड एक्शन पोटेंशियल. सो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, सम ऑफ द सोडियम विल गो टुवर्ड द नेबरिंग एरिया एंड इट विल प्रोपेगेट, है ना. नेक्स्ट एरिया को फिर यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है उसको ओपन अप कर देंगे. उसी तरह
फिर क्या होगा, फिर नेबरिंग एरिया को करेंगे, इस तरह से क्या होगा, दोनों साइड में ये स्वीप करेगा, and it will propagate this side also. So on both sides of the motor end plate, this action potential will sweep, and action potential will cover all the muscle membrane, that is the sarcolemma acid, muscle fibers membrane. Okay, so what will happen, the action potential will develop. Are you able to understand till now? So in this way, जैसे action potential muscle membrane पे develop करेगा, so you know within the muscle membrane there are sarcoplasm, है ना, अंदर में sarcoplasm है, and there are calcium reserves there, वो calcium को activate करेगा, and the contraction machinery will be excited. We will discuss, वो आपको जब muscle जब पढ़ाएंगे तो next class में. Okay, so in this way this neuromuscular transmission will occur. So what happens, but this transmission has to be, क्या होता है, इसका कहीं ना कहीं ending तो होगा. So what happens that the acetylcholine, they do not have to remain forever. What happens that there are, to break down, to control this acetylcholine, there are acetylcholine enzymes which are present there on the membrane itself, or they are floating there in the ECF also. So they capture the acetylcholine, extra acetylcholine, and what happens that they break down into the acetate and choline. Okay, due to the presence of these enzymes. Acetylcholine is enzyme, they break down the acetylcholine, they capture the acetylcholine, and they break down into acetate and choline. What happens that acetate, they will be diffused out through the blood. The blood में क्या करेगा, diffuse कर देगा, because there are machinery which can manufacture here, है ना, already mitochondria से वो manufacture हो पाता है. And choline, there will be, क्योंकि ये body में generate नहीं हो रहा अंदर में, it is coming from outside, so it can be reused and they can be recycled and go to the choline transporters, है ना, इसके अंदर जा सकते. Okay, so in this way this will happen. And what happens that this vesicular membrane, ये rupture होने के बाद they can be reformed, they can be recycled, and there a presence of receptor mediated endocytosis के लिए एक प्रोटीन होता है that is called clathrin. पढ़ा होगा आपने फिजियोलॉजी में, है ना, जब आपको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में endocytosis exocytosis बताया आपको, there is a receptor mediated endocytosis due to the presence of clathrin, है ना. So this clathrin molecule helps in the recycling of the vesicular membrane. Okay, these are integrated sodium channels, these are acetylcholine enzymes. So we have this, I think we have understood this mechanism. The action potential, just you can make it a flow diagram, and action potential at motor nerve and terminal, है ना, motor nerve terminal में पहुंचा, then due to the incoming action potential, the voltage gated calcium channels will open up, and this is most important point. Voltage gated calcium channels will open up, so there will be influx of calcium ion. किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना? So as calcium mediated, जैसे calcium अंदर आएगा, it will mediate the fusion of the vesicular membrane with the presynaptic membrane. दोनों को fusion को mediate करेगा, है ना, this calcium. And there will be exocytosis of the vesicles. The contents will be released out. Okay. Then, as the acetylcholine will come into the synaptic cleft area, they will, through the diffusion process, it will reach the postsynaptic membrane area, and acetylcholine will be attaching with the nicotinic cholinergic receptors, especially A type, and we have discussed sodium influx. Due to that channel will be opened up, and because it is operated by acetylcholine, that channel, उसको हम किस तरह के channel कहते हैं? Ligand operated channel. No, ligand operated channel. There are voltage gated channels. Okay, there are leaky channels. There are ligand operated channels also, because some substances have to be attached. Then after that only, that is called ligand.
Okay, so due to the sodium influx is more than the potassium influx, leading to the development of end plate potential. This end plate potential is not a action potential because it is not due to the opening of voltage gated sodium channel. Okay, so some of the sodium will trickle over the nephrotic area, nephrotic areas में चले जाएंगे, flanks area में, and because there is presence of voltage gated sodium channel, due to the trickling of the sodium channel, the resting state in the flank area, they will come close to the firing state and a threshold potential, and there will be opening of voltage gated sodium channel. So the muscle action potential will develop and it sweep all over the muscle membrane. The action potential will propagate. The muscle membrane के ऊपर में क्या होता है? There are tubules. We'll discuss in the next class. There is sarcotubular system. Okay. अंदर में T tubules होते हैं. उसके थ्रू क्या होंगे? वो एक्टिवेट करेंगे वहाँ पे contractile machinery को. In that way, the muscle will contract. Okay. This was another diagram. You can see sodium आया next area को. These are the calcium we discuss. So hypothetical situation you may think of एक hypothetical situation इसमें एक पूछा जाता है what is miniature end plate potential. Miniature end plate potential means minimum end plate potential. What may be the possibility? This is a hypothetical situation in that which you can think of that there is a single vesicle, एक vesicle जो है वो release हुआ, single quanta of vesicles have been ruptured. एक वेसिकुलर मेम्ब्रेन ही सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है ना, लो स्ट्रेंथ एक्शन पोटेंशियल था. तो व्हाट हैपेंस दैट एक सिंगल क्वांटा ऑफ ए सिंगल पैकेट ऑफ वेसिकुलर मेम्ब्रेन व्हेन इट गेट्स रप्चर्ड, व्हाट विल बी द फ्लक्चुएशन चेंज, potential change in the motor end plate area. So it is a hypothetical situation in which a single quanta of vesicular membrane is released, and due to that there is slight fluctuation in the end plate potential. That minimum change in the potential end plate potential is called miniature end plate potential. Okay, अगर आपने सोचा कि एक ही सिर्फ वेसिकुलर मेम्ब्रेन रप्चर कर रहा है, उसके चलते जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है एंड प्लेट रीजन में, उसको मिनिएचर कह देंगे. इट इज वेरी लेस, इट इज मे बी -90 मिलीवोल्ट था तो -9.4 मिलीवोल्ट इतना चेंज होगा एक सिंगल क्वांटा से. आर एबल टू अंडरस्टैंड? So the quantal release is the vesicles of the multi-molecular packet acetylcholine is different. जो packets है उसको हम quanta कहते हैं. Different vesicular membrane which is having the acetylcholine is having a quanta, है ना? इसको हम quanta and its release process is quantal release. So depolarization of the terminal button causes release of about 60 to 200 vesicles from the pre-synaptic membrane. एक बार pre-synaptic membrane जो होता है तो 60 to 200 vesicles rupture होते हैं. And each vesicle, एक vesicle में कितना acetylcholine होते हैं? Up to 10,000 acetylcholine molecules are there. Okay. So what is the fate? We have discussed all these things. Acetate, choline होता है ना? Acetate is diffused through the ECF and goes out of your body, and acetylcholine is reuptaken, है ना? And also there are to control acetylcholine sprays enzyme. We have discussed all these things. And some of the acetylcholine also they diffuses to the surrounding tissue, है ना? एक तो breakdown होता है ना? And also some of the acetylcholine they diffuse to the surrounding areas of the tissue. And what is the fate of vesicles? We have discussed that it may be peeled off by the contractile protein that is clathrine, and it may be recycled. The vesicular membrane may get recycled by endocytosis process. End plate potential we discussed is a graded potential, and the amplitude will depend on the amount of transmitters which are released. Okay, and it is always, this is important, this end plate potential is always a depolarizing potential. आपको पढ़ाया था graded potential may be depolarizing और hyperpolarizing also, है ना? Negativity या तो कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है. Okay, so negativity कम होगा when there is influx of sodium ions, है ना? Influx of sodium ions, और ज्यादा कम होगा where there is influx of anionic channels. तो अगर अंदर आना शुरू हो जाए. Are you able to understand?
या पोटेशियम बाहर ज्यादा जाना शुरू हो जाए, निगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हाइपरपोलराइजेशन में भी ऑल्सो देयर, बट जो स्केलेटल मसल्स में होते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल जो डेवलप करते हैं, इट इज ऑलवेज ए डिपोलराइजिंग पोटेंशियल, ओके। लेकिन स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में वहां पे हाइपरपोलराइजिंग भी हो सकती है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट इज ऑलवेज ए डिपोलराइजिंग पोटेंशियल। एन एवरेज ह्यूमन एंड प्लेट contains about 15 to 14 मिलियन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। एंड प्लेट में कितने होते हैं, मिलियंस में होते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ओके। एंड ईच नर्व इंपल्स रिलीजेस अबाउट 60 to 200। दीज आर सिंपल फैक्ट्स एक्चुअली, ओके। एंड व्हाट इज अ सेफ्टी फैक्टर, इसमें एक सेफ्टी फैक्टर वर्ड आता है, दैट इज व्हाट हैपेंस दैट जितना आपका एसिटाइलकोलिन आ रहा है, ओके, and they can activate the amount of neurotransmitter that is released. This is enough to activate 10 times the number of receptors. जितना आपको एंड प्लेट पोटेंशियल को, ओके, फायरिंग लेवल तक ले जाने के लिए, मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल को तो फायरिंग लेवल तक जाने के लिए जितना आपको रिसेप्टर्स चाहिए, ओके, तो एक्टिवेट होना चाहिए। तो दिस द अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिलीज्ड from the vesicles, this can activate up to 10 times the number of receptors. So it is much above the number which is required to generate and to reach the membrane potential to the firing level. So there is a safety factor. इसे क्या कहते हैं, safety factor. Okay. So this is called the safety factor. So what happens that stimulation of a motor neuron, this will never fail. जब भी हम स्टिमुलेट करते हैं, अगर एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, नर्व को आपने स्टिमुलेट कर दिया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्केलेटल मसल स्पेशली। दे विल नेवर फेल टू एक्साइट एन एक्शन पोटेंशियल इन अ मसल बिकॉज ऑफ हाई सेफ्टी फैक्टर, बिकॉज द सेफ्टी फैक्टर ज्यादा होता है, ओके। तो मिनिएचर वी हैव डिस्कस्ड व्हेन द मोटर नर्व इज एट रेस्ट कॉन्टिन्यूअसली ऑकरिंग पोटेंशियल चेंजेस। अपने आप क्या होता है, देयर आर रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, small amount of neurotransmitter they are continuously being released, but they can generate only miniature end plate potential. That is, the fluctuation will be 0.1 to 4 millivolt only, okay, due to the Brownian movement, okay, causing fusion of some vesicles and release of acetylcholine. It is to the Brownian movement actually. And the size of the quanta इसका वैरी कब होगा, इट इज डायरेक्टली जितना कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा उतना ज्यादा होगा, एंड इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन। मैग्नीशियम अगर ज्यादा होगा तो रप्चर कम होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो फैटिग ऑन रिपीटेड स्टिमुलेशन, अगर बार बार हम स्टिमुलेशन कर रहे हैं, देयर में भी फैटिग में सेट एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड इट्स वेसिकल्स। एंड दिस क्वेश्चन में भी आस्क्ड दैट what is the first site of fatigue? First site of fatigue क्या होता है? It is the CNS, and second site of fatigue is neuromuscular junction. First being the CNS in the intact region. Okay. In nerve muscle preparation को पढ़ा तो frog में वहाँ पे क्या होता है? Neuromuscular junction, जब हम NMJ क्या करते हैं, फ्रॉग का नर्व मसल प्रिपरेशन करते हैं तो हम फिटिंग करके उसका हटा देते हैं। फ्रॉम दैट उस केस में क्या होगा, द एनएमजी विल बी द साइट ऑफ फैटिग इन द न्यूरोमस्कुलर प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली सिनेप्टिक डिले इज ऑफ 0.5 मिलीसेकंड ओनली, ओके, एंड इट इज ऑर्थोड्रोमिक, वन वे कंडक्शन होता है, आगे की तरफ जाएगा, ऑर्थोड्रोमिक, एंड रेस्पॉन्स इज ग्रेडेड, okay, and it is directly proportional to the release of neurotransmitters, and it depends upon the calcium influx. So these are the properties. So you have to also understand about the drugs which are affecting this. What are the different drugs? These are very important drugs, and these are routinely used during surgeries by the anesthetist people. क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प कर रहा है। What happens that रिलैक्सेशन, क्योंकि जब आप सर्जरी करते हो तो उस टाइम में क्या होता है, हमें रिलैक्स करना होता है बॉडी, तो उसमें ये यूज करते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड। तो
न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन ब्लॉक करते हैं तभी तो रिलैक्सेशन आएगा. तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ब्लॉकर मे बी ड्रग्स, मे बी केमिकल्स, मे बी टॉक्सिन्स और ट्रॉमा, इसके चलते न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का ब्लॉकेज हो सकता है. So obviously there will be failure to generate the required end plate potential. Required end plate potential is mandatory to develop the action potential over the muscle membrane. Okay. So obviously जब ट्रांसमिशन नहीं होगा क्या होगा? EPP डेवलप नहीं होगा. So there will be paralysis of the skeletal muscle. Contraction नहीं हो पाएगा. There will be paralysis. Obviously there are some it is in tonic state. है ना? Muscles में अभी आप रिलैक्स कंडीशन में हो, इसका मतलब क्या है? इसमें टोनिसिटी स्टिल दिस है, फ्लैसिड तो नहीं है. Okay. So to do that, if you apply neuromuscular transmission blockers, there will be paralysis of the skeletal muscle, and if the hip muscle will involve the respiratory muscle, what will happen? It may endanger the life. So there are diseases in which the respiratory muscles are also involved. Okay, in that case there is risk to the life. Okay, like a disease called, कौन सा डिजीज है? माइस्थेनिया ग्रेविस सुना है ना? उसमें भी रेस्पिरेटरी फेलियर के चलते क्या होता है? मसल्स काम नहीं करते, है ना? तो पेशेंट में डाई. So the drugs are used, these drugs are used during surgery and during some hyperactive state like convulsions किसी को आ रहा है ना, उस केस में हम रिलैक्स करने के बाद. ओके, यू हैव गॉट द, आपको अटेंडेंस रोल नंबर मिल गया आपको? नो. तो अटेंडेंस अपना एक पेपर पे ले करेंगे. तो स्टार्ट इट्स वो. So the blockade can occur. This blockade, neuromuscular transmission blockade, it can occur pre-synaptic area और post-synaptic area, है ना? दोनों एरियाज में हो सकते हैं ब्लॉकिंग. So we'll discuss through this diagram how these different blockers may act. The blocking may occur at this area, pre-synaptic blockade हो सकता है या post-synaptic blockade हो सकता है. First we'll discuss about the pre-synaptic blockade. This sodium, the incoming action potential which is coming here, this sodium channel may be blocked, and the drug blocks this voltage gated sodium channel. What is that called? That is called tetrodotoxin. Tetrodotoxin. Okay, this is a drug which blocks, which comes from a fish actually, fish oil. Okay, and this drug can block this voltage gated sodium channel. So it is one of the presynaptic blockers. Then these choline transporters may be blocked. जो choline transporters हैं ये blockage हो सकते हैं by a drug called hemicholine. Okay, so this is another presynaptic blockage. And also there is a very important toxin which you must have heard, that is botulinum toxin. Botulinum toxin का नाम सुना है? From where it comes? Which bacteria it comes? Clostridium botulinum. It is a gram-negative bacteria, and this toxin may get inside through these choline transporters actually. And what it will do? This will hamper. This will destroy this synaptobremin. This will destroy the synaptobremin over here and syntaxin here. इन दोनों को क्या करता है? डिसइंटीग्रेट करना. So obviously they will not interact and the release process will be hampered. So this is a Clostridium botulinum which releases the botulinum toxin. Okay. So the muscle will be paralyzed here. And another inhibitor is the, ये जो आपका acetylcholine transporters थे, acetylcholine transporters, they may be also blocked by a drug called resomicol. Okay, so these are all the pre-synaptic blockades. Okay, then the post-synaptic. Now pre-synaptic, you are able to understand. So the post-synaptic blockade, what it will do? There is a arrow poison. You must have heard that a curare like drug that is used earlier used
in the with the arrow to hunt the animal, and that arrow poison called the curaro, that is D-tubocurarin, is a drug. What it does, it blocks this, it acts as a depolarizing blocker. ये जो आपका ये जो channels है, cholinergic channels, acetylcholine channels, they block this channel. So what will happen? They will not, the acetylcholine will not bind here. है ना, acetylcholine क्या करेगा? ये D-tubocurarin इसके साइड पे जाके बैठ जाता है. Okay. So what happens that the interaction of acetylcholine will not occur. So this channel will not be open. So the depolarization will not occur here. है ना, यहाँ पे plate potential develop ही नहीं कर पाएगा. So what will happen that it acts as a depolarizing blocker. This is a post-synaptic blockers में आ रही है. There is another type of blocker which is called non-depolarizing blocker. Okay. एक क्या होता है? We have discussed here pre-synaptic में blockers में ये सारे drugs थे. Then botulinum toxin we have discussed. Few points about the botulinum toxin. One of the most potent natural toxin. Even a very small amount of this toxin may endanger the life. Okay, even microgram. The lethal dose for an adult human is around 2 to 3 micrograms. That's why it is used also as bioterrorism agent. है ना? तो क्या करते हैं, एयर में या वाटर में इसको मिला देते हैं. ओके, तो बायोटेररिज्म की तरफ भी यूज होता है. एंड इट इनएक्टिवेट these two proteins we have discussed. It causes a disease जिसको हम कहते हैं botulism. It is a paralytic disease in which respiratory muscles may also be involved and the subject may die. Okay, and there is a diluted form of this toxin which is being used in clinical practice. तो टॉक्सिन्स निकलते हैं उसको बहुत डाइल्यूट कर देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज में यूज किया जाता है. लाइक ए डिजीज कॉल्ड एक्लेशिया कार्डिया. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड, एक्लेशिया कार्डिया? दिस इज ए डिजीज इन विच देयर इज डिस्फैजिया. सब्जेक्ट क्या करता है, पानी पीता है या खाता है तो अंदर जा नहीं पाता, अगर से नीचे नहीं जाता. वहां पे क्या होता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है. लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बिकॉज देयर इज डैमेज टू अ नर्व व्हिच इज सप्लाइंग द एसोफेगस. ओके, सो इन दैट वे व्हाट हैपेंस दैट इट रिलैक्सेस द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर. रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, फूड प्रोडक्ट जा सकते हैं. सो इट विल बी यूज्ड इन दैट कंडीशन. बोटॉक्स ट्रीटमेंट यू मस्ट हर्ड इन केस ऑफ रिंकल्स ऑफ द फेस आल्सो, है ना. उसको भी स्ट्रैबिस्मस. Have you heard of this strabismus? Squint तो सुना होगा. There is misalignment of your eyes. है ना, एक आई इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं. There is no alignment of your focus. है ना, उसको strabismus करते हैं, squint. तो उसमें भी यूज करते हैं. And also in case of wrinkles of the facial muscles, used by cosmetologists. And these are used as bioterrorism agents. In post-synaptic neuromuscular transmission, we are discussing, these are frequently used as muscle relaxants during anesthesia. तो anesthesia में आप जाओगे तो वहाँ पे ये ड्रग्स आपको सुनने को मिलेगा, है ना. So there may be competitive or non-depolarizing blockers. Non-depolarizing blockers जो क्या होता है, competitive blockers है. वो acetylcholine से competition करता है उस साइट के लिए. एसिटाइलकोलिन के जगह पे आकर, ओके, तो दीज आर कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर और नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर. डिपोलराइज नहीं होने देते. ओके, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर. सो इट ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू इट्स रिसेप्टर बाय द कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म एंड इन दैट वे इट विल प्रिवेंट द डिपोलराइजेशन. सो इट इज नॉन डिपोलराइजिंग. डिपोलराइज होने नहीं देते. ओके, so example of curare-like drugs, you will hear the tubocurarin, pancuronium, vecuronium, atracurium, participle drugs आते हैं, injection आते हैं, है ना. Anesthesia they frequently use these drugs. Okay, then galamine is another
post-synaptic neuromuscular blocker, competitive blocker. Okay. Then another one is the non-competitive or depolarizing blocker. ये कंपटीशन तो नहीं करता, ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन आ रहा था वो क्या करता है, उसको इनहैंस कर देता है. सो व्हाट हैपेंस दैट एक साथ बहुत ज्यादा एसिटाइलकोलिन क्या करता है, उसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करता है. सो व्हाट हैपेंस दैट at a point of time it is stuck, the sodium channels, the voltage gated sodium channels, they are stuck at the inactivated state. वो एक साथ में ज्यादा आने से क्या होता है, इनिशियली तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाद में क्या करेगा वो, फिर वो वहां पे रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है. ओके. सो it acts as agonist to the acetylcholine receptor and it causes sustained depolarization. एक depolarization एक ही पॉइंट पे ज्यादा करेगा. So it is stuck. It blocks the inactivated gate of the sodium channel. उसको ओपन ही नहीं होने देता. Okay. So the initial depolarization causes some contraction, but after it is followed by the inactivation. It is blocking or by the blocking of the inactivated gate of the sodium channel. Are you able to understand this? Because sustained contraction होने के चलते क्या होता है, जो सोडियम चैनल से वो inactivation जो गेट है उसका वो ओपन ही नहीं हो पाता, वहां पे जाके ब्लॉक कर देते. ओके. तो सोडियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो ओपन अप नहीं हो पाते कंप्लीटली. So that's why initially it causes some contraction, but it will be followed by flaccid paralysis. Okay. So the example is succinylcholine, okay, and carbamylcholine. These are the two drugs. In this diagram you can see. No, यहाँ पे this was the succinylcholine. Okay, you can see here synergistic effect. Okay. So these are about the different neuromuscular blockages. There are another drugs also. That is the reversible acetylcholinesterase inhibitors. So acetylcholinesterase that was breaking down the excess acetylcholine, उसको inhibit करने का drugs होते हैं. That is reversible acetylcholinesterase inhibitor, so that the action of acetylcholine will enhance. Acetylcholine का availability बढ़ जाएगा और acetylcholine क्या करेगा, वो ज्यादा काम करना शुरू करेगा. So this may be used in case of myasthenia gravis disease होता है, उसमें यूज करते हैं. So we'll see. Prevent the hydrolysis of acetylcholine. Obviously hydrolysis को रोक देगा क्योंकि acetylcholine स्ट्रेस तो हाइड्रोलिसिस कर रहा था, उसका इनहिबिटर है ये. Okay. So it is used in diseases like myasthenia gravis. Myasthenia gravis में basically होता क्या है? What happens that there is formation of autoantibodies against these acetylcholine receptors. जो receptors हैं उसको destroy करना शुरू कर देते. So what happens that whatever the acetylcholine receptor are present, acetylcholine का availability को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं. तो एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो सकता है, कोलिन रिसेप्टर जो लेफ्ट आउट है उस पर ज्यादा अच्छे से बाइंड करता है. ओके. सो इट में इनहैंस द परफॉर्मेंस इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. सो देयर अटैचमेंट, ओके, बिकॉज व्हेन द concentration of the drug falls, so the block is removed after some time. That's why it is called reversible. Example is neostigmine and phyostigmine, and also pyridostigmine भी होता है. Pyrodistigmine. Okay. So these are the reversible acetylcholinesterase inhibitors. There are irreversible cholinesterase inhibitors also, जो कि irreversibly वो क्या करता है, वो बाइंड करते हैं, irreversible होते हैं. So what happens? Irreversible cholinesterase inhibitors are nerve gases. ये भी क्या करेगा, जब irreversible हो जाएगा तो क्या होगा, acetylcholine की एबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा. देखो जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो it may inhibit because sustained contraction होने लगेगा. Okay, I like the succinylcholine which was active.
Okay, so sustained depolarization followed by flaccidity. So what happens that there are examples of irreversible acetylcholine receptor inhibitor are organophosphorus poisoning होता है, organophosphate insecticides like parathion, malathion, dagon spray. Okay, these are OP poisoning, है ना, organophosphate insecticides होते हैं. And there are sarin and DSP. Okay, so these are fluorophosphate, dioxyfluorophosphate. These are nerve gases which are used during warfare. Okay, these are used for warfare, and what they will do? They will bind to the acetylcholine receptor very tightly. So the ability of acetylcholine will be more. Hydrolysis कम हो जाएगा acetylcholine का. So there will be sustained end-to-end depolarization. So it followed by paralysis. Okay. So no further contractions will occur and subject in response to subsequent nerve impulses. So this poisoning causes skeletal muscle paralysis and death may result due to respiratory muscle failure, asphyxiation. Okay. इसके ट्रीटमेंट में हम एट्रोपिन देते हैं. Atropine is a drug which is which acts as the against the organophosphate हो जाता है, तो उसमें हम देते हैं ये. Okay, and also a drug called pralidoxine. है ना, ओपी पॉइजनिंग का केस जब मिलता है, आप इमरजेंसी में काम करोगे तो ओपी पॉइजनिंग का केस काफी मिलता है. There is a antidote is called the PAM, pralidoxine, and atropine is also given. Both the drugs are given. Okay. Reduction in the some point of the myasthenia gravis. So what happens that this is the immune headquarters. Suppose this is your antibody जहाँ से produce हो रहा है, immune headquarters. What happens that something went wrong in the immune machinery, and what happens that it starts producing some auto-antibodies. Okay, and these auto-antibodies may damage this receptor channel, that is acetylcholine receptor channel. When this receptor channel is damaged, they produce the myasthenia gravis like condition. लेकिन कुछ एंटीबॉडीज के क्या होते हैं, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को क्या करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं, डैमेज करते हैं, एंड दैट ऑल्सो विल हैम्पर दिस ट्रांसमिशन. उसको हम क्या करते हैं, उसमें भी मसल का वीकनेस होता है, एंड दैट कंडीशन कॉल्ड एनीबॉडी यू कैन टेल लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम. वेरी सिंपल डिफरेंस. दोनों ऑटो एंटीबॉडीज बना रहा है, लेकिन इसका जो एंटीबॉडीज है मायस्थेनिया ग्रेविस में, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करता है. एंड ईटन सिंड्रोम में क्या है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में इट इज ईटिंग अप द दिस कैल्शियम चैनल. ओके, सो इन बोथ द चैनल, both these diseases, ultimately what will happen, there will be paralysis of the muscle, but there are differences. The differences you have to understand. What happens that myasthenia gravis is characterized by extreme muscular weakness. Obviously, we have discussed the acetylcholine receptors will be destroyed, and also receptor तो destroy होंगे, ये जो आपको फोल्डिंग है ये फ्लैट होने लगती है. ओके, ये जो फोल्डिंग है वो आपको वो फ्लैट होना शुरू हो जाती है. ओके, तो फंक्शनिंग रिसेप्टर्स नहीं मिलेगा. फीचर्स क्या होंगे, फैटिग. At this fatigue, if you will do the EMG, electromyograph, what you will see a decremental response to repetitive nerve stimulation. मतलब ये जब ये ज्यादा काम इनिशियली तो ठीक रहेगा, जैसे ये काम इसका बढ़ता जाएगा, the weakness will aggravate. मतलब मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा शाम होते होते वो थका आ रहा हो जाएगा. ओके, so due to the decremental response to repetitive nerve stimulation on EMG. Okay, muscle weakness increases during prolonged use of the muscle and improves after rest करने के बाद ठीक होने लगेगा. Okay, feels better in the morning and symptoms aggravate towards the evening. लेकिन ये रिवर्स का आपको लैम्बर्ट ईटन,
ओके, जैसे ये काम करता जाएगा उसका इफिशियंसी बढ़ता जाएगा. ओके, so and in the myasthenia gravis remains are affected more in the ratio of 3:2. And what will happen if we involve the extraocular muscle? There will be diplopia and ptosis. Ptosis means eyelids क्या होते हैं, ड्रूप हो जाते हैं, उसको कहते हैं ptosis. Drooping of eyelids is called the ptosis. Double vision is the diplopia. So when the extraocular muscles in the eyelids are lost, we will feel the diplopia. Ptosis. This is ptosis. You can see it. है ना, eyelids droop होने लगे. And the proximal limb muscles are more involved. Proximal muscles जो होते हैं, they are commonly involved. And in extreme cases, respiratory muscles will be involved. Treatment क्या करेंगे? Acetylcholine स्प्रे, inhibitors देंगे, acetylcholine के लेवल को बढ़ाएंगे, pyridoxine में, neostigmine. And thymectomy, जहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज बन रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. इम्यूनोसप्रेशन, स्टेरॉइड देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, एजिथ्रोप्रेन. ओके, एंड आल्सो प्लाज्माफेरेसिस, दैट इज क्या करते हैं, प्लाज्मा को फिल्टर आउट करते हैं, ऑटो एंटीबॉडी जो चले गए उसको हम रिमूव करते हैं. रिमूव द ऑटो एंटीबॉडी. लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द, तो बता दिया आपको, ये डिस्कस दिस थिंग. इसमें आपको क्या बताया था, मसल वीकनेस तो होगा बट इट विल इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स मिलेगा. Have you given the roll number? Roll number हो गया. With prolonged contraction, muscle strength will increase. स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स से साइनेप्टिक एरिया है, जंक्शनल एरिया है, थोड़ा डिफरेंस होता है. उसमें सिनेप्टिक टर्मिनल बन रहा था, इसमें क्या होगा, मल्टीपल वैरिकोसिटीज इस तरह से होते हैं. ओके, we'll discuss this when we are discussing the smooth muscle. ओके, यहाँ पे एक सिनेप्स बनता है, उसको हम सिनेप्स एंड पेजेंट कहते हैं. ओके, तो और ये बताया था इट विल बी एक्साइटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी. ओके, so we will cover in the next class. We will discuss